स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आप सभी का स्वागत है स्पेशल क्लास में जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज कवरिंग द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इवन द मेंस पर्सपेक्टिव. Prelims and mains, from both perspective, we are going to cover the most important topics in art and culture. Okay, I am your educator Arpita Sharma and we are going to start the prehistoric rock art chapter today. So what are the sources from which we are going to cover these important topics? I'm going to use Nitin Singhania sir's book, NCERT's Tamil Nadu State Board books, class 11th, okay, and also previous year question papers, so that your art and culture's preparation can become more holistic. आपके आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन और ज़्यादा होलिस्टिक करने के लिए हम ये सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की किताबें, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक्स. ठीक है. So let's start with prehistoric rock art. Now prehistoric rock art is extremely important from the prelims perspective. ये prelims के perspective से ना बहुत ज़्यादा important है. So accordingly we are going to prepare it, okay? And from the mains perspective also what kind of question can come, that also we are going to solve, okay? Total आपकी 20 classes होगी art and culture की, तो आप end तक इस lecture को देखिएगा and daily at 5 PM these classes will be will go live. So attend the classes live, take notes, okay, and also revise, revise भी करें, re-revise भी करें. ठीक है. So before we start the session, here's a small little announcement for all of you that such classes we are also taking them on Unacademy Plus. The new batches are starting from today, that is 1st of Feb 2021. We have the expert batch over here, wherein we are going to prepare you for mains also, prelims also, even the interview. Here we are also going to do monthly coverage of important current affairs from the PIB Yojana Kurukshetra magazine, and there will be live classes, notes will be provided, recorded classes will also be there in case you miss the live lecture, and the classes will be in two batches, bilingual batch and English batch, okay? So you can use this code Sharma20 to get 10% instant discount on your plus subscription. फटाफट से आज ही एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि सारे बैच आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द एनसीईआरटी बैचेस, class 6 to class 12th, okay, and complete 1 year batch, 2 year batch, all these batches are there on Unacademy Plus starting from today, that is 1st of Feb. So use code Sharma20, get 10% instant discount and crack this exam in your first attempt, okay? So let's start. We are going to start with the prehistoric rock art paintings. Now, before we study the prehistoric rock art paintings, we should know what do you mean by the term prehistoric. हमें इसका आंसर पता होना चाहिए. We should know the answer, right? So when we talk about the prehistoric period, we basically study the Stone Age. We start studying history from the Stone Age. When we talk about history, history has been taken from a Greek word. ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है which means historia. ठीक है, which is historia, and historia means inquiry, to obtain knowledge through inquiry, through investigation, that is history. Okay, so history is divided into three parts. ये जो history term भी है ये तीन parts में divided है. This entire history we study it in three parts. First we have the prehistory period, then we have the proto-history period, okay, you can write it down, and then we have the history, okay. तो अब जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, इट इज द पीरियड व्हेन देयर वाज नो लिटरेचर, नो रिटन टेक्स्ट, नो बुक. जब कोई किताब नहीं थी, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं था, कोई किताब बुक नहीं थी, ठीक है, दैट इज प्री हिस्ट्री. व्हेन वी हैड ओनली आर्ट, सिर्फ हमारे पास आर्ट थी, ड्राइंग्स थी, ओके. देन प्रोटो हिस्ट्री, अगेन प्रोटो हिस्ट्री इज अ पार्ट व्हेन communication was developing, knowledge was developing, but it was spread orally. नॉलेज तो थी बट ओरली स्प्रेड हो रही थी. अगेन वी हैड ओनली आर्ट ओवर हियर, नो रिटन टेक्स्ट बुक्स, बट इन हिस्ट्री वी हैड लिटरेचर. यहाँ पर अपना लिटरेचर आ जाता है, ठीक है. अब प्रोटो हिस्ट्री में ना हमारे पास कुछ साइंस सिंबल्स थे. इन प्रोटो हिस्ट्री वी डिड नॉट हैव एनी टेक्स्ट बट वी हैड सम साइंस एंड सम सिंबल्स. फॉर एग्जांपल द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, okay, that belongs to proto-history. But Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic period belongs to your prehistory, because here we do not have any written evidence, nothing of that sort. No symbol, no sign, we only have the art forms. So now Stone Age, when we study it, it is again divided into different forms. First is the Paleolithic Stone Age. पहला हो गया Paleolithic era. Paleo means old and lithic means stone, so it is also known as the old stone age, okay. Then we have Mesolithic period, फिर हमारे पास Mesolithic period आता है. Then we have the Neolithic period,
And the fourth one is the Metal Age. In Metal Age we have the Chalcolithic period, ठीक है, and we have the Harappan civilization or Indus Valley civilization, that is the Metal Age. ठीक है, we also have the Iron Age in which Vedic period we have to study. Okay, so in art and culture we study the art and culture start from Stone Age. ठीक है, हम Stone Age से शुरू करते हैं. So let us understand what is prehistoric. Prehistoric, the distant past when there was no paper or no language or the written word, hence there were no books or any written document. This period is called the prehistoric period. इसी period को हम prehistoric period भी बोलते हैं. ये बात आपको याद रखना. You have to remember this. There was no book and no written document, that is why it is known as, and no written word. कोई paper भी नहीं था, language भी नहीं थी, written word भी नहीं था. Now the question comes, when there was no language, how did people communicate? They communicated through sounds and through signs. Okay, hand signs. So it is very difficult to understand how prehistoric people lived until the scholars began excavations in prehistoric sites. For example, Mehergarh, for example, Burzahum, right? These are the prehistoric sites where the archaeologists have excavated. And that is how we know about the different stone ages. हमें कैसे पता चला? जब वहां पर रिसर्च हुई, सर्वे हुआ, एक्सकवेशंस हुए, तभी तो मालूम पड़ा, ठीक है, कि प्रीहिस्टोरिक टाइम पीरियड कैसा होता था. Now when we talk about prehistoric art, it denotes mainly the rock paintings, because why? Lithic means stone. ठीक है, लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन. व्हेन वी से पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, वी सी द रॉक पेंटिंग्स ओनली. यहाँ पर कोई ऐसे बिल्डिंग्स नहीं होती थी, देयर वर नो बिल्डिंग्स, रॉक पेंटिंग्स वर देयर. ओके, दैट इज व्हाई इन प्रीहिस्टोरिक एरा आर्ट वी सी द रॉक पेंटिंग्स, पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द caves, on rock structures, etc. So what kind of question they can ask you in your मेंस एग्जामिनेशन? मेंस के एग्जाम में वो किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. So over here, question can be, examine the significance of prehistoric painting. Significance means importance. इसका मतलब क्या होता है? Importance होता है of prehistoric paintings which are found in India. Also trace the changes that occurred in the painting styles during this period. So in Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic period, what were the changes which were seen in the style of paintings? That the question is asking. पहली बात तो importance बताओ कि ये जो prehistoric paintings पाई गई हैं इसका क्या महत्व है, ठीक है. और सेकंड आपको बताना है कि Paleolithic से Chalcolithic period तक क्या changes देखे गए, ठीक है. So when we introduce our answer, first you will introduce what is prehistoric period. सबसे पहले तो आप introduce करोगे कि भैया ये prehistoric period होता क्या है, ठीक है. So prehistoric period is a period when there was no paper or there was no language or no written word or any record. That is prehistoric time. Then in India, Bhimbetka caves, which are surrounded by the Vindhyan mountain ranges near Bhopal, have more than 600 caves that have the oldest prehistoric paintings in India. So here you will introduce your answer that how many prehistoric paintings we have in our country. Then only you will explain the significance ना. उसके बाद ही आप significance समझाएंगे. पहले आप explain करोगे कि हमारी country में कितने prehistoric paintings पाई गई हैं. First you explain the meaning of the word prehistoric. Then you explained and told the examiner that these are the number of paintings that are found in India belonging to prehistoric times. And these caves have been used as shelter by people from the earliest periods. Rock cut caves, these cave shelters, they were used as homes, right? And these are paintings, there are paintings of all periods from the Paleolithic till the medieval period, and the paintings turn out to be a mirror showing the evolution of humanity through time. Do not miss this statement at any cost. इस statement को किसी भी cost पे miss मत कीजिएगा, ये काफी important statement है. This statement shows why this prehistoric paintings are relevant, because it's like a mirror. आप इसके through जान सकते हो कि कैसे evolution हुआ है. You can know the evolution of different periods, different animals, human species during these paintings. This is very important line. Make sure you are writing it down. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्लास में सिर्फ बैठकर ऐसे खोए नहीं हुए हो, आप नोट्स भी बनाते जा रहे हो, ठीक है. Moving forward, now we will start with the significance of prehistoric paintings in India. What is the importance? Now, whenever the question comes in mains regarding the importance of prehistoric paintings, make sure that you write in number. आप पॉइंट या नंबर फॉर्मेट में आप लिखें, because significance always has to be pointed out. ठीक है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस हमेशा पॉइंट आउट करना पड़ता है, तो आप नंबर फॉर्मेट या पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. So the way people lived in those times is very difficult to surmise.
know that how people used to live exactly at that period, it's very tough. हमें नहीं पता कि कैसे exactly रहा करते थे. But when the scholars started excavating different places where prehistoric people used to live, they started getting an idea. They started getting an idea about the lifestyle of the people at that time. Excavation at these places brought to light the old tools, the pottery, the habitats, bones of ancient human beings, animals. Pottery मतलब जो घड़े होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं, the vessels of mud. So those are pots, ठीक है? And art of making these vessels is pottery. So drawings on cave walls, these excavations, राइट, ये जो एक्सकवेशंस हुए हैं जिससे हमें पता चला कि किस तरीके के औजार थे, पॉट्स थे, हड्डियां थी, हैबिटेट्स थे, किस तरीके की ड्राइंग्स थी, किस तरीके के एनिमल्स थे, ये हमें पता चलता है. एंड बाय पीसिंग टुगेदर ऑल दीज इंफॉर्मेशन दैट वी हैव डिड्यूस्ड, right, finally we conclude that what used to happen at that period, how much knowledge the people had. Because see, in Paleolithic period, in the initial part of Paleolithic period, people had no knowledge about fire, ठीक है? And when they started having a knowledge of fire, they didn't know how to use it. मिडल में आकर जब उनको पता चला कि चलो आग होती है, ऐसे बनती है, उनको प्रॉपर यूज नहीं पता था. Then when they started using fire in the later period, later Paleolithic period, they used fire only to heat the or cook the meat, ठीक है? मीट को गर्म करने के लिए, कुक करने के लिए यूज किया करते थे, और टू कीप देमसेल्व्स वार्म, ठीक है? नो फर्दर यूज वाज देयर. फर्दर यूज कुड बी सीन इन द मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड, देन इन चाल्कोलिथिक पीरियड, एंड देन Indus Valley civilization. So when we look at the art forms of all these period, we gradually know how the mind or brain of the humans was developing, what they thought, how they thought, what was the way of their thinking. That is why studying prehistoric paintings is very important. We need to know how our people in that period used to live, used to think, used to walk, used to talk, right? So the prehistoric paintings, they are the greatest wealth the primitive human beings of this period left behind. Very important and very beautiful statement that you can incorporate your answer also. यहाँ तक point clear हो रहा है? Now let us have a look at the changes in the painting styles. What were the changes? We will start with the upper Paleolithic period. हम शुरू करेंगे यहाँ पर upper Paleolithic period से. ठीक है? Point clear हो गया सभी को? चलो. So prehistoric paintings have been found in many parts, but there is no proof if lower Paleolithic people ever produced any art object. But lower is the early Paleolithic period. In that period, people didn't know how to draw. People was just trying to survive. सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे. बट देन आपका लेटर पेलियोलिथिक पीरियड में या अपर पेलियोलिथिक पीरियड में पीपल स्टार्टेड डेवलपिंग आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, talent. So we see drawings of human figures, human activities, geometric designs, symbols on the cave walls. So now the location and the sites that I am going to discuss, make sure you are writing it down. जो मैं sites और location discuss करने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप उसको note down करेंगे. So the paintings of upper Paleolithic period, अपर पेलियोलिथिक पीरियड में अर्लीस्ट पेंटिंग्स पाई गई हैं. दे आर इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर्स लाइक बाइसन्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, rhinos, boars, ठीक है, and stick like human figures. So in the upper Paleolithic period, they drew many animals like tigers, rhinos, then boars, elephants, bisons, जो आपके भैंस होते हैं, ठीक है, और human figures को वो stick representation में draw करते थे. What do you mean by the stick representation? अब stick representation का मतलब क्या होता है? Like this, ठीक है, point clear हो गया? Stick figures जो हम बचपन में सीखते हैं. The rock shelters on the banks of the river Suyal, which is at Lakudiyar, ठीक है, about 20 kilometers on the Almora Berchina road, bear these prehistoric paintings. So remember this river Sual at Lakudiyar. This shows the early Paleolithic period rock paintings. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया सभी को? तो जल्दी से बताएं. If the point is clear, let me know in the comment section. I'm looking at your comments. जल्दी से मुझे बताएं कि point clear हुआ कि नहीं हुआ. ओके, अब हम बात करते हैं लाखोदियार की. वेयर इज लाखोदियार? इट इज इन उत्तराखंड. लिख लीजिए इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है. द रिचेस्ट पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर केमूरियन एक्सटेंशंस, दैट इज द केमूर हिल्स इन यूपी. केमूर हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? यूपी में. एंड दीज हिल रेंजेस आर फुल ऑफ पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स.
ठीक है। देन वी हैव द वेरी फेमस भिमबेटका आर्ट पेंटिंग्स इन एमपी। कहाँ पर है ये? एमपी में है। वेयर वी फाइंड द डांसिंग पीपल, पीपल आर हंटिंग, horses, elephant riders, animal fighting, honey collection. Even honey collection has been depicted in the paintings. Decoration of bodies, other household scenes that we can see in the Bhimbetka paintings. And there is a superimposition of paintings. हर period में, that means this is Paleolithic period. People have drawn a drawing like this. ठीक है। Now coming towards the Mesolithic period, again people will draw images on this earlier drawn image only. Then comes Neolithic period. Neolithic period में भी people will draw image over this image only, earlier image only. So this is known as superimposition of paintings. ठीक है। Over here you can see this is the Bhimbetka painting. ये जो है ये आपकी Bhimbetka rock paintings है। ठीक है। कुछ 400 रॉक्स पाए गए हैं यहाँ पर जो पेंटेड है इस तरीके से। ओके, पॉइंट क्लियर। दिस इज अ सीन ऑफ हंटिंग। ये सीन है आपका हंटिंग का, लोग हंट कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज द बिम्बेटका पेंटिंग। आप देख सकते हो हियर ऑल्सो पीपल आर हंटिंग दिस एनिमल। यहाँ पर भी हंट हो रहा है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मेसोलिथिक पेंटिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द मेसोलिथिक पेंटिंग, जब हम मेसोलिथिक पेंटिंग की बात करते हैं, द लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू पीरियड 2, दैट इज द मेसोलिथिक पीरियड, दैट कवर्स द मेसोलिथिक पेंटिंग्स. The most important sites are this over here, Langnach, that is in Gujarat. Then we have Mahadaha. ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यूपी के आसपास महादाह है। then we have Bhimbetka. Bhimbetka is both, it has both the Paleolithic and Mesolithic paintings. Then we have Adamgarh in Madhya Pradesh and Sanganakallu in Karnataka. Remember these sites for your preliminary examination. ये sites आपको आपके preliminary examination के लिए याद रखने हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट मीन्स हियर देखो एक बात आपको और याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट द पीपल ऑफ मेसोलिथिक पीरियड वर नोन एज हंटर्स एंड हर्डर्स। हर्डर्स का मतलब चारवाहे। ठीक है। द वन हु हर्ड दी कैटल्स। ओके, सो हियर हंटिंग सीन्स आर वेरी प्रीडोमिनेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ज्यादातर हंटिंग सीन्स देखे जाते हैं, दैट पीपल आर हंटिंग इन ग्रुप्स, दे आर आर्म्ड विद barbed spears, pointed sticks, arrows and bones. Okay, some people are trapping the animals, and people are also shown wearing simple clothes and ornaments. In the Paleolithic period people were naked, but in Mesolithic period they are wearing clothes. And in some paintings these primitive men are shown with traps and snares to catch the animals. So now the human mind was evolving, they knew how to trap the animals now. So these are the paintings belonging to the Mesolithic period. Over here you can see bow and arrow, people are having bow and arrow. And देखो यहाँ पर I'll show you another point, just give me a second. यहाँ पर आप देखोगे इस इमेज में, इन दिस इमेज यू विल सी दैट दे आर वेयरिंग समथिंग अराउंड देयर वेस्ट। अपने वेस्ट के पास ना ये कुछ पहने हुए हैं। ठीक है। सो पीपल आर वेयरिंग क्लोथ्स, दे आर हाइडिंग देयर बॉडी। ठीक है। तो ओवर हियर यू कैन सी दे आर हंटिंग इन ग्रुप, एंड दीज आर द डिफरेंट साइट्स बिलोंगिंग टू द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। ओके, ये अलग अलग साइट्स हैं। Then coming towards the Chalcolithic age. Now Chalco means, Chalco का मतलब होता है, write it down, it means copper. ठीक है। चाल्कोलिथिक एज का मतलब कॉपर होता है, और लिथिक मीन स्टोन, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। सो हियर द फर्स्ट मेटल कॉपर वाज यूज्ड। ठीक है। ये आपके साइट्स हो गए मेहरगढ़। ठीक है। ये सारी डिफरेंट साइट्स, चिरांद, ब्रह्मगिरी, इनाम गांव, दीज आर द डिफरेंट चाल्कोलिथिक साइट्स. So the paintings of this period reveal the association, contact and mutual exchange of requirements of the cave dwellers of this area with settled agricultural communities of the Malwa plains. So now they were more settled in this period. इस पीरियड में लोग ज्यादा सेटल्ड हो रहे थे. And the artist of Bhimbetka used many colors including various shades of white, yellow, orange, red, ochre, purple, brown, green, black. This is again important. ठीक है। The paintings do not lack pictorial quality. Now the quality of the paintings are also wonderful. Here in Bhimbetka 20 paintings can be seen over here. Bhimbetka में आप देखोगे 20 से ज्यादा पेंटिंग्स पाई जाती हैं. So prehistoric paints, they are a lens. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, प्लीज राइट इट डाउन. दे आर लेंस through which archaeologists have been able to predict the evolution of humankind. हमें कैसे पता चला इतना एक्यूरेटली कि कैसे इवॉल्व हुआ आपका ह्यूमन बीइंग? ये पेंटिंग्स के थ्रू ही पता चला. What they were witnessing, what they were seeing, they were drawing it. So now we know how they evolved, how they developed. ठीक है. That is why it's very important to preserve these sites that have immense information stored about our history. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आवर ओन पीपल.
ठीक है. So this was the prehistoric rock art class for all of you. I hope you enjoyed today's session. Do not forget to subscribe to Unacademy Plus today, because from today the new batches are starting. You can use this code Sharma20 to get 10% discount on your प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल. तो आज से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 1 फेब से. अगर आप चाहें तो फटाफट से आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप फटाफट से बैचेस को अटेंड कर सके. ओके, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीबॉडी.